Okay. So in last session, we have seen the application of load for one of the case for the wind. We have applied the dead load, live load, and one wind load case for all the members. And I have just added all the other cases: wind load 2, wind load 3, wind load 4. Because as you know, we have four cases for wind. That is, case one is for the CPE plus CPI when the wind load is acting in 0 degree. Case 2 is CPE minus CPI when the wind load is acting in 0 degree. Similarly, we have other two cases for the wind when it is acting in 90 degree. So I just added those load cases here, and I have added some combination as per our IS code. This is for the purely for the dead load plus live load. There is no any wind load or anything. But this is for the ultimate case of dead load and live load. This case is for the 1.2 dead load, live load, and wind load. So this combination where we can get all these combinations. We have combinations in IS 456 where we can get the what factors should be there for the load cases for each load case. So this is when wind load is considered. The factor for dead load and live load will be 1.2. Similarly, this is wind in plus direction, wind in minus direction, or when we say, or we can say that wind is acting in the windward direction, and we are just changing. If we are considering minus, means we are changing the leeward windward direction. So zero point 0.9 dead load plus dead load. This load case is considered to calculate the uplift force or tension in the support reactions, so that we can calculate the number of bolts required for the tension. Okay, so let's see for the combinations. So these are the combinations. For dead load, live load, we are considering factor limit strength for strength combinations 1.5, 1.5. When we are considering wind load, it is 1.2 for dead load. For live load, it is 1.2, and for wind and seismic, it is 1. Okay. For wind and seismic, it is 1.2, 1.2. So that's why we have considered this combination 1.2 dead load, live load, and wind load. Okay. And for uplift case, when we are considering dead load plus wind load or earthquake load, it is zero point 0.9 for the dead load and 1.5 for the wind and seismic, or dead load plus this is ER is for stands for the erection load, and dead load plus live load plus this AL. This is accidental load. For that, we are considering the load factor for live load and all other companion loads 0.35. So these are the some of the load combinations. So while preparing combinations, uh,
Here I have considered only one wind load because this wind load is considered. Similarly, we have to make a combination for these three cases. We have to repeat these combinations. One is for the plus wind and other for the minus wind. So for this also you will get another 18 combinations because we are getting three combinations here and three combinations for each load. So total 9 combinations we will get it from these other three wind loads. Okay, so this is how we have applied the loads. If anyone have any queries on application of the load, then we can discuss, or else we can proceed with the STAD parameter assignment, or we'll see the what are the parameters if we want to assign for the design of the members. Anyone have any query on the how to apply load or any calculations? No, sir. So we'll go with the parameter, how to assign the parameter in STAD and which are the most important parameter. Uh, so we'll start with the first code. So in STAD, first we have to define the code, what code we are going to use. So when I'm saying design, so design, here first I need to select the code. Here you can find all country code like American code, British code, Canadian code. All codes are there. So amongst all these, we have to select the code for which we want to design. So we are considering IS 800 2007 limit state method. So I'll just select this code, and for that code we will have parameters. So once we select the code, we need to select the parameter which we want to consider. So we will click on the select parameters. So now there are so many parameters. These are already selected parameters, so we just need to shift these all parameters, and one by one we have to see and we have to select those parameters which we need to apply. So we'll go through this PDF. It is it is already given in the STAD also in help. You can find these parameters in the STAD help command. So we'll go with one by one parameters. Here, the most of the parameters are related to the connections and very few required for the design of the member. So we'll see each parameter and we'll see what parameter we need to consider. So first code, we have selected the code. If you want to select American code, then also you can select the American code from here. American code is AISC, AISC or AISC 365. So here also there is a parameter. So once you select the code, the parameter which are supported by that code will be available here. So among these parameter, we have to select the required parameter for design. So first, let's okay. So first code is assigned. Now the second parameter is alpha. Its default value is 0.8. If you don't define anything in the STAD by default it will consider the value as a 0.8. But what is this alpha? A factor based on the end connection type, controlling the rupture strength of the net section as per section 633. Section 633 is the for the connections. But when we want to define this when we define this factor, if we define zero point 0.6, it is for one or two bolts, zero point 0.7 for 3 volts, and zero point 0.8 for the 4 or more volts. Normally in STAD we don't design connection here. Nowadays we have a RAM connection. In If anyone is using STAD Connect Edition, there is a RAM connection inbuilt software or inbuilt application is there in the STAD itself. So we use that application for connection design. So while designing of the member, we don't need to define this alpha parameter because it is just defining the how many number of bolts we are going to use. So by default, it is a zero point 0.8. So for 4 or more number of bolts, so it is on conservative side, right? So it is on conservative side. So it is giving it is reducing the net area of the section. So
Practically, while doing the design or doing the analysis in the stat, we don't require this parameter because we are designing connections in the RAM connection, or most of the time people are designing it in the Excel sheets. Now ATG, ATG is none. This ATG, ATN, AVG, AVN. So all these are, this is gross area in tension, net area in tension, gross area in shear, and net area in shear. So all these parameters, these four parameters are for the block shear check, right? When we apply or for the connection, there has to be a block shear check performed. Block shear check means if our connection is like this, and if these are the my bolts or bolt holes, right? So this may be the connection time. Sometimes what happens that because of the high tension in the member, because of high tension, what happens? Sometimes the failure occurs somewhere here. So somewhere here failure occurs, and from here the complete section gets failed out. So these holes remain intact. There will be no like tearing or anything, but the complete block of the section, it gets failed, and uh, it fail along the center line of the bolt. So for this we have to get these areas, and this is one of the connection check which we need to perform while designing the connection, so that it will govern the thickness of the web or the plate, connecting plate what we are going to use. So based on that we have to select the thickness required. So these four parameters we don't define in the STAD when we are doing the section design. So we don't require these four parameters also, but just uh, remember for what we need these parameters, because when you design it in RAM connection, all checks are performed with these values. So you should know what is the what value defines what, and which will be the governing factor for that value. So if it is area tension, area in tension, gross area in tension, then we need to consider the thickness of the member, so that the gross area should increase. When we are considering net area in tension, in that case, the number of holes or bolt diameter should be such that the total net area should be more. Instead of getting more and more holes getting deducted, net tension area available should be more. Similarly, for the shear, so in order to check what is the failure and why it is what it is governing, we should know all these terms. Then next is beam. So now this parameter is one of the important parameter. So beam, what is beam? So beam is by default its factor is 1, and if you define 0, then design at ends and those locations specified by the section command. So when we define beam as a 0, then it will perform the design at end of the beam. So if this is my beam, and if I define beam as 0, then design will be performed for the forces at this location and forces at this location, only for these two ends. And if I define any location by the command section, then it will perform for that location. If I by using this section command, if I assign to check the section capacity at this location, then that will be performed by the beam. But if I keep value as a default one, then what the STAD will do? STAD will design this section for every 1/12 length of the member. So STAD will divide this member into 12 equal parts.
it will divide the member into 12 equal parts, and for each part it will calculate the capacity, and it will compare that capacity with the actual movement at that location, right? So that is and that is the good option for the stat, so that if there is any bending moment, because sometimes what happens, we have the bending moment at the center maximum, and along with that we'll have some axial load also. So when we are designing for combined bending and axial load, that central part will be the governing one rather than end of the members. So that's why we have to define beam as a one, so that STAD will design the member for 12 parts of the section. So we'll just consider a beam parameter here. So we have selected first parameter as a beam, then can. Can is the for can is 0. By default its value is 0, so that whatever beams are there, it will be considered as non-cantilever beams for checking of deflection. And if cantilever beams are there, then we have to define it as a 1 for cantilever beam. So it will calculate the permissible deflection based on that parameter, and it will compare that deflection value with the cantilever deflection. So can one. So most of the time in steel we don't prefer to provide cantilever. This is only for the pure cantilever, right? In STAD or in a steel structure, we normally how we provide the beam. So if this is my column, this is the beam. We never provide this kind of arrangement in this steel structure. Normally we provide bracing to this member, so that it will not be a pure cantilever, but you can say it is somewhat like prop cantilever type or simply supported beam, we can say. So when we have to define this can command, when it is completely or purely cantilever member, if there is no bracing, then we can define this as a can one command. Okay. Then cmx, cmy, cmz, this is by default value is zero point 0.9. This is equivalent uniform movement factor for lateral torsional buckling, and cm value it is in y and z direction. This is factor for lateral torsional buckling. By default value is zero point 0.9. Lateral torsional buckling means when we if there is a beam, right, and if there is any UDL or any load acting on that member, then it will try to bend in lateral direction because of less inertia in that direction. So it will try to buckle, or sometimes it will because of these ends are fixed, it will try to rotate also, like it may create a torsion in the beam. So that factors is defined by this cmx, cmy, cmz. So we don't need to define it in the stat, it will automatically consider the value of zero point 0.9. So but in order to avoid this lateral torsional buckling, we provide a tie beam or bracings. So we'll check it later on, or when we designing the parameter like effective length in x and z direction. So we don't need to define this parameter also, because we normally avoid lateral torsional buckling in the member, because it reduces the capacity of the section, like bending capacity and axial capacity. So DBS, this is again for the block shear check. So this will also not required for us. It is related to the connection design only. Then DFF. DFF is what? It is check for the deflection of the beam. So DFF value is most of the time, as per the code, it is 360. For different code it is different, like somewhere uses as 300, at some in India we use normally L by 360. So 360 is the dividing factor which we use to get the permissible deflection of the beam. If my beam is of 6 meter, then for that to get the permissible displacement or permissible
deflection of the beam. It is L by 360. So my permissible deflection for the beam is 16.67 mm. So how we can define it by using DFF? So DFF is what? Deflection length divided by maximum allowable local deflection. So if my deflection is 6 meter, maximum allowable deflection is 16.67. So for 6 meter, this is my deflection length divided by 16.67 is my permissible or allowable displacement. So this is 360. But we don't know the, so instead of defining maximum allowable deflection for each member, what we define DFF is equal to 360, right? So once we define DFF is equal to 360, what STAT does? STAT actually work out the deflection length. So this is deflection length, STAT knows, divided by 360. So it will get the permissible deflection of 16.67, and STAD will just compare the 16.67 deflection with the actual deflection coming in the member. Okay, so here if you just take, so this is the vertical deflection, right? DFF is used for the vertical deflection only, not for the horizontal deflection. So this why we are getting 16.59 mm deflection. So for what member it is getting? So we are getting it for this member, right? So which is our 12 meter member. So for 12 meter, if my deflection is as per the requirement, it is 360. It is 13.33 mm. But how much I am getting? I am getting 16 mm only. So my section is pass in deflection. So it is not failing in deflection. So that's why we need to define DFF as 360. So based on that, the STAD will calculate the allowable deflection for each member, and it will compare the deflection due to the analysis or due to the load with the allowable deflection, and it will just simply provide us the result, whether the section is pass or fail. Okay, this DFF is clear. If there is any confusion in the parameter, just let me know so that I can revise it now only. DFF is clear now. So now how to get the length of the member, right? So we have, so if you see it here, we have these two members here, right? Because node is created. So but STAT don't know that this is the complete length of the member. If we don't define the dj1 dj2, STAT will consider this as a one member. It will calculate the deflection for this much of the length, and for this much of length it will calculate this separately. So in order to get this complete length of the member, or to understand STAT that this is the complete length or this much is the length of the member, so that we have to consider by providing dj1 dj2. So what is dj1? Dj1 is the start joint of the member, and dj2 is the end joint of the member. So how we get that? We have a node number here, right? 41 and 47. How to identify start and end? Just by checking the start and end of the member. So here in this case, my dj1 will be the 47 and dj2 will be 49. So once I assign dj1 as a 47, dj2 49, the STAD will consider its length of the member 5 meter. Right? If I don't define dj1 dj2 for these two members, then STAD will consider one member between the node 47 and 56, and the other member between 56 and 49. So these two are the members which we need to combine in the for checking of deflection. In that case, we can assign dj1 as 47 and dj2 as a 49. Okay, so this after DFF we need to assign dj1 dj2. Then dmax, this is maximum allowable depth, but we never define that this maximum allowable or minimum allowable, because normally we don't check the depth from the STAT. We provide like L by 10 or L by 12 depth of the beams, or depending on the span.
So we don't require to define these two parameters. Then Fu is the ultimate strength of the member or any plate element. So as per code, it is 420 MPa by default, and FYLD is the yield stress, that is 250. So these are the standard values which are provided in the STAD also. We have to use the same. If there are, if you want to change, when you we are using different codes, then as per the codal requirement or country specific, those values are changing. Sometimes it is 460 or 410, and also this FILD value, yield strength value, it changes as per the country requirement. Sometimes it is 235 Newton per mm square or 245 Newton per mm square. And this yield strength value goes on reducing as the thickness of the plate or member goes on increasing. So when the thickness of the flanges of the member is more than 30 or 40 mm, then this value get reduced. So this is the ideal value for the member up to the size of I think 20 to 30 or 35 thickness. Once we go beyond 30 or 40 then this value get reduced. Can anyone knows why this value will get reduced if we increase the thickness of the member? Any idea? If I have a two member, one of this thickness and another of this thickness, why the yield stress for this member will get reduced and why not for this one? This is for the steel only. Any idea? So whenever we go on increasing the thickness of the steel plate element or any member thickness, then what happens? As we go on increasing the thickness, it becomes more brittle. It loses its ductility, right? You must have seen the copper wire, right? There are two types of copper wire. One is with a very thin wire, and you can see those are multiple wires in the single coating, and other wire is like hard wire. So it's as its thickness increased, it becomes brittle. You can break it with your hand, right? But that small wire you cannot break it with the hand, right? It will just get elongated. It will not break. So as the thickness of the steel member increases, its ductility goes on reducing, and that's why it becomes brittle and it will fail due to the it may fail in uh, fail brittle. It can occur a brittle failure instead of ductile failure or sudden failure. So that's why this yield strength is reduced. Instead of 250, it goes on reducing as we go on increasing the thickness of the plate. So whenever we want to combine plate or sometimes we have to prepare a built-up section, right? In that case, you may require a section size or flange thickness of 40 mm, mostly for the plate girder. If we are designing the plate girder, in that case, we may need flange thickness of 40 mm. So instead of going for the 40 plate directly, what we normally do, we provide a two plate of 20 right? We normally provide a two plate of 20 So what this will provide? First thing, it will provide you the ductility. Okay. Second thing, it will give you a chance to make it optimized section just by reducing the plate thickness, because when we are designing any plate girder, we require the maximum thickness at the center. So you can just provide a plate for the particular location, additional plate, and for rest of the portion you can reduce the thickness of the plate. So this is the advantage of using small plates, and it will also provide you the more ductility. So this is FYLD that is we have to define. KX, KY, KZ. KX, KY, KZ. These are the effective length factor for lateral torsional buckling as per table 15.
So this is the effective length factor. This effective length factor is based on the end condition. If it is fully restrained, torsional restraint and wrapping restraint. These are the loading condition. For normal loading, it is 0.7. For destabilizing, is for lateral loading, or like wind or seismic, it is 0.85. Yeah. So based on this, we have to consider the this lateral torsional buckling factor kx, ky, kz. Okay. So these three factors, its by default value is 1. If we have to define the value for the beam, then we can go with this table, but conservatively it is always 1. Okay, for effective length. For column, effective length factor calculation will be depending on the stability index. We in that case we have to calculate the stiffness of the beam and column connecting at that joint, and accordingly we have to define the ky and kz factor for the column. When we provide braced frame, then it is considered as a non-sway frame. So in that case, the maximum effective length factor will be 1. But whereas when we consider the moment frame, in that case, it can go up to the infinity because of the sway. It is a sway frame. When we consider a moment frame, it will be a sway frame. And based on that, we have to calculate the effective length factor. Has anyone calculated effective length factor for the concrete before? Anyone have calculated the effective length factor for a concrete columns? No one? सर वो कोड में तो पढ़ा है सर. अच्छा, कुछ याद है क्या पढ़ा है? क्या है एग्जैक्टली सर मतलब उसमें वो एंड कंडीशन पे है कि अगर फिक्स्ड एंड कंडीशन है तो थ्योरेटिकल 0.5 होता है और रिकमेंडेड 0.65 है. ऐसे डिफरेंट एंड कंडीशंस पे है. वो एंड कंडीशन जो है इट इज डिफिकल्ट टू अचीव ऑन द साइड, राइट? यस सर. बिकॉज जो दिया है, बिकॉज समटाइम एंकरेज इज नॉट प्रॉपर, और कि आप मान लीजिए कि 0.65 अगर दिया है, या कहाँ क्या बोलते हैं हम लोग कि वो बोथ एंड्स में रिस्ट्रेंड है अच्छे से, लेकिन आप जब यस साइड पे सर. जाते हो तो आप देखोगे कि आपका एक कॉलम वीक है, मतलब कॉलम ओनली 400 बाय 400 का है, लेकिन बीम का डेप्थ ज्यादा है। तो उस केस में क्या होता है, अलग बिहेवियर होगा। और समटाइम व्हाट हैपेंस कि कॉलम बहुत तगड़ा है, 2 मीटर बाय 2 मीटर का कॉलम है, उसके सामने बीम बहुत छोटा है, तो वो कॉलम को रिस्ट्रेन देगा क्या? नो सर. नहीं देगा, नहीं देगा, राइट। अगर मेरा कॉलम ऐसा है बड़ा, और उसके आगे मेरा बीम इतना से आ रहा है, ये बीम कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना से ही बीम दे रहा हूँ, so this will not provide a restraint because its column stiffness is much higher than this beam stiffness, right? So if this deflects, this will not resist, और ये इसको support ही नहीं करेगा। So in that case what will happen, the total building will sway, right? So based on this concept, there is a some method given in the our IS 456 to calculate the effective length factor. So when we consider, हाँ बोलिए। प्रैक्टिकली सर इफेक्टिव बेन निकालने के आई थिंक 0.85 इंटू एल करते हैं। नहीं नहीं, वो तो वो आइडियल कंडीशन हो गया।
in which we are considering that stiffness of both the column and beam दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, राइट? अगर Yes. मेरा ये बीम अगर इतना है तो ये बीम कुछ ना कुछ रिस्ट्रेन देगा, राइट? Yes, sir. अगर बीम ही छोटा है, ये बीम ही छोटा है, तो ये क्या रिस्ट्रेन देगा? मान लीजिए कि एक हाथी खड़ा है, उसके आगे आप किसी को बोल दो को हाथी को सपोर्ट करो, तो जो सपोर्ट करने वाला है वो तो स्ट्रांग चाहिए ना, नहीं तो वो हाथी उसको लेके डूबेगा। तो हाँ सर। वही कंसेप्ट है यहाँ पे भी कि आपका जो स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम का एक कंसेप्ट रहता है, और यहाँ पे भी क्या है कि कॉलम का स्टिफनेस और बीम का स्टिफनेस इट शुड बी सच दैट दैट कॉलम विल get a restraint from the beam. If not, then we cannot consider this column as a tie for this column, right? आपका जब मल्टी स्टोरी फ्रेम कंसिडर करते हैं आप, तो क्या होता है कि ये एक बीम है, तो आप क्या कंसिडर करते हो? जब स्टील का डिटेलिंग करते हो आप कंक्रीट का, तो आप सिस्मिक के लिए करते हो तो क्या कंसिडर करते हो कि दिस इज द जॉइंट, राइट, विच कैन रेजिस्ट द शेयर फोर्स, और आप जो डिटेलिंग करते हो ये स्टैगरिंग करते हो लैब का। But if this beam is very weak, then there is no point in making staggering of the reinforcement because आपका यहाँ पे मूवमेंट ही नहीं जनरेट होगा। यहाँ पे क्यों करते हैं हम? बिकॉज वी थिंक दैट कि ऐसा कुछ तो मूवमेंट जनरेट होगा मेरा। ये कॉलम का मैं सेंटर लाइन लेता हूँ। हमारा कंसेप्ट क्या रहता है जब हम बीम प्रोवाइड करते हैं तो मेरा मूवमेंट जो है ऐसा जनरेट होना चाहिए जब सिस्मिक या कुछ आएगा तो। ऐसा कुछ होना चाहिए सो दैट wherever there is a beam there should be a रिस्ट्रेन, और चेंज होना चाहिए, मूवमेंट का डायरेक्शन में चेंज होगा। अगर रिस्ट्रेन नहीं है तो क्या होगा? ये सिंपली ऐसा कुछ तो होगा, राइट? तो ये पूरा मूवमेंट कॉलम में जो रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा। सो बेस्ड ऑन दैट और टू काउंटर दैट फैक्टर our IS 456 has some this annex E to calculate the effective length of the column. अगर आपका नॉन स्वे बिल्डिंग है, जब हम ब्रेसिंग वगैरह डालते हैं तो इट बिकम्स अ नॉन स्वे, in that case it will be a 1 maximum, it can go up to the 1 जो हम यहाँ पे ले ही रहे हैं, right? We are considering it here as a default 1, so there is no issue when the building is braced or frame is braced. When it is a non braced frame or non sway frame, then it can go up to the infinity. infinity पे जाएगा वो, 10 भी आएगा, 12 भी आएगा, कुछ भी आएगा। तो वो कैसे निकालते हैं? फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द स्टेबिलिटी इंडेक्स टू डिसाइड वेदर द फ्रेम इज स्वे फ्रेम और नॉन स्वे फ्रेम। ओके, तो स्टेबिलिटी इंडेक्स हाउ विल कैलकुलेट दिस? Q is the stability index, this summation of PU, if PU is the sum of the axial load on all column in the story। अगर एक स्टोरी पकड़ रहे हैं हम लोग, ये स्टोरी है बराबर, ये एक स्टोरी है, तो यहाँ पे कितना लोड है, एक्शियल लोड कितना है बिटवीन दिस स्टोरी एंड दिस स्टोरी, so that is PU। then delta U is first order lateral deflection। अभी जब हॉरिजॉन्टल लोड लगेगा तो ये कुछ तो डिफ्लेक्शन आएगा कॉलम में, तो Yes वो sir. कितना है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, वो कितना है फर्स्ट ऑर्डर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। देन HU इज द टोटल lateral फोर्स एक्टिंग विद इन द स्टोरी। जो सिस्मिक शेयर है तो वो यहाँ पे कितना है, दोनों स्टोरीज पे, तो वो एक कैलकुलेट करना है। एंड H इज द हाइट ऑफ द स्टोरी, ये हाइट कितना है, तो इसके बेसिस पे हमको क्या मिलेगा? स्टेबिलिटी इंडेक्स मिलेगा। इफ दैट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 0.04, देन कॉलम इन द फ्रेम में बी टेकन एज नॉन स्वे कॉलम। तो वो नॉन स्वे कॉलम हो जाएगा, मतलब स्वे नहीं है उसमें, फिर आप मैक्सिमम इफेक्टिव फैक्टर जो आएगा आपका 1 आएगा। अगर वो स्वे होता है, अगर ये वैल्यू 0.04 से ज्यादा आते हैं तो इट इज कंसिडर्ड एज अ स्वे कॉलम एंड इफेक्टिव लेंथ हैज टू बी कंसिडर्ड एज पर दिस चार्ट। Okay, so to use this chart, we need to get this beta 1 and beta 2. So what is this beta 1 and beta 2? It is here. So beta 1 and beta 2 are equal to summation of Kc divided by summation of Kc plus Kb.
तो ये क्या है, स्टिफनेस ऑफ कॉलम divided by stiffness of column plus stiffness of beam. So now we have beta 1, beta 2. So what it is, we have two joints, right? One joint is here, another joint is here. So we have to consider the column. So column is 1. So its stiffness we can calculate. I by L is the stiffness of the column. Then we have to calculate the summation of KB. Means the number of beams when we are considering this direction. Right? When we are considering this direction, I have to consider the beam framing in this direction. So this is one beam, and if another beam is framing in this direction, so stiffness of that beam I have to consider. So I will add these two stiffness for getting the beta 1 in this direction. Similarly, to get the beta 2, I'll consider the other beams at lower story or higher story. Right? Length which we are considering, based on that we have to consider the beams. So this is beta 1, this will be beta 2. When I am considering in other direction, at that time also Kc will remain same, but Kb will be changed because there could be a change in beam size on other side. So that will be the beam stiffness we have to consider, Kb. So based on that we will get these two values, beta 1 and beta 2. And just based on that beta 1, beta 2, we have to plot the chart, and we have to calculate the effective length. So it may range from the 0 to infinity. If it comes around 2, then we have to define ky or kz, whatever direction. So if you are getting in ky direction, you are getting 2, and kz direction, you are getting 1.4. So accordingly, we have to define this factor ky kz as 1.2 or 1.4 or 2, right? So this will multiply with your length of the member, then you will get the effective length of the member, right? Clear this one? Yes, sir. Yes, sir. Ky kz, why we need to calculate, right? Then lateral is 0, its value is by default 0, specifies lateral support of beam as per section 821 and 822. When we consider 0, beam is laterally supported, and when we consider 1, beam is laterally unsupported. So its value default is 0. So when we consider this beam, it is considered, now it is considered as laterally supported beam, right? Then LST defines the longitudinal stiffeners used. Actually, this stiffener we are using when we are providing the uh, girder or built up section. During that time, it is required to define the stiffeners, but this is just it is not, we don't need to define it in the stat. We have to prepare a manual calculation to get the number of stiffeners required, so that we can reduce the flange height, flange height, or flange cantilever part, or the to support the wave, so that its slenderness will increase. So we don't need to define this parameter LST in the stat. So this LX, LY, LZ. So these are the most important factor. Out of that, LX is we can ignore, but LY and LZ are the most important. LX is for the effective length for lateral torsional buckling. So if I consider this length, so for lateral torsional buckling, this complete length will be effective. So LX will be 6A, right? Or you can say unsupported length for lateral torsional buckling, because we don't have any member here, right? We don't have any member for lateral torsional buckling. When there will be any wind, any vertical load or any load acting on the beam, it will reflect laterally. So this is the complete length for lateral torsional buckling. Then LY, length to calculate the slenderness ratio for buckling about y-axis. So just will have some sketch here. So this is my I section.
of the axis. Okay, so this axis is y, this is y axis, and this is z axis. So when we define Lx and y, okay. So Lx we know. Now Ly. Ly is the length to calculate slenderness ratio for buckling about y axis. So in this case, this is my Ly axis, right, about Ly axis, and this bending about z axis. So I need to define this Ly. Ly will be 6 meter because there is no tie beam or anything to provide restraint to this. So this will be the Ly, right, and this will be my Lz, and Lz is broken due to this bracing. So Lz can be considered half, whereas Ly can be considered full. Okay, so we'll have some more detail on this. Uh, so in this case, for this beam, I think we have discussed in one of the session also while assigning the parameter. So if this is the beam, so in this case, since I have bracing here and tie member here, then my Ly will be 3.059. For this member also 3.059, right? But Ly for this member will be 6.119, right? Lx for this member will be, it is completely laterally torsionally unsupported, lateral torsional unsupported member. So the length for this member is 6.119 Lx, but for this member it will be 3.059, 3.059. Okay, so I'll just prepare some sketches. Have you understood this Lx, Ly, and Lz parameters? Yes, sir. So let's have some sketches. So these are the columns. Let me prepare a drawing. Some drawing we will see. I have this frame or this plan member. Okay. So just tell me what is Ly for this member. It is 4150. So what is Ly for this member? Is it visible? थोड़ा जूम कीजिए. The length of this member is 4.150. What will be the Ly length? Will it be a 4.15 or 2.075? 2.075 सर. Okay, and why it is? सर आपने बताया एल वाई ऊपर है, एल एक्स वाई, तो एल वाई का हाइट सर ऑरिजिन से 2.075 है. नहीं, बट रीजन क्या है उसका, क्यों वो 2.075 आएगा? Why it is so?
एल वाई हाफ हो गया मतलब क्या हुआ उसमें? पता नहीं सर। So what will happen in this case when we are considering, so ये complete length है 4.150, right? जी सर। Right, we have provided this bracing, बराबर। यस सर। अभी इसको मैं सोचता हूँ। तो नॉर्मल केस में अगर ये ब्रेसिंग नहीं होता तो इसका डिफ्लेक्शन कैसे होता? जब यहाँ से आपका यहाँ पे अगर वर्टिकल लोड आ रहा है कुछ मेंबर पे और या विंड लोड वगैरह कुछ लग रहा है, तो इसका अगर ब्रेसिंग नहीं होता तो नॉर्मल डिफ्लेक्शन कैसे होता? ऐसा होता, यस सर। राइट। अभी ब्रेसिंग है तो कैसे होगा? ब्रेसिंग है तो एक ऐसा होगा, राइट। यस सर। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज दिस ब्रेसिंग विल प्रोवाइड अ रिस्ट्रेंट, राइट। जब ये when it tries to buckle or bend, what happen? There will be a axial force getting generated. This axial force will be passing through this member, but at the same time that force is getting transferred back to the column, right? That's why it bends or it deflect like this, right? If there is no bracing, then it will buckle like this, complete for it will buckle for a complete length, not for the half length. So whenever we have a bracing, then ly gets half or according to the length of the bracing. Now in this case ये मेंबर में, तो अभी इसका ly क्या होगा? मैं लेंथ दे देता हूँ 3, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक है। 3 लेंथ है अभी, 1800, 1200 एंड 1485। तो इसमें से ly क्या दोगे आप मेंबर को? It will be designed for this length only, 1800, 1200 and 1400, right? Because it will, we have bracing for this much of part, then this part will be deflecting separately and this will be deflecting separately, right? So ly will be this much, right? अभी मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेसिंग ही नहीं है, if there are no bracing, right? So what will be the ly and lx? If there are no bracing, what will be the ly? सेम रहेगा या चेंज होगा? चेंज होगा सर। कितना होगा अभी चेंज हुआ तो? आई थिंक सर जितना लेंथ दिया वो पूरा हो जाएगा 4150। ये इतना होगा जी और क्यों होगा वो? सर। रीस्टेंट नहीं दे रहा सर, प्रोवाइड नहीं करा रीस्टेंट। रेसिंग नहीं दिया हुआ। रिस्ट्रेंट नहीं दे रहा है मतलब रेसिंग नहीं क्या दिया। होता है वो दिखाता हूँ अभी। जब ये मेंबर हम ड्रॉ करते हैं, राइट, इसको कॉलम है इधर कहीं पे, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये member। जब ये मेंबर दिया है अभी इसका, इस केस में इसका एलवाई क्या होगा? ये मान लीजिए आपका 3 मीटर है, इसका एलवाई क्या होगा? ये भी 3 मीटर है, ये हाफ में है, ये 1.5 मीटर पे है,
इसका एल वाई क्या होगा और इसका एल वाई क्या होगा? सर यहाँ ब्रेसिंग प्रोवाइड किए होते हैं, इसका एल वाई। फर्स्ट वाले का तो फुल हो जाएगा 3 मीटर, यस सर। ओके, और इसका 3 सेकंड हो जाएगा। वाले का हाफ हो जाएगा 1.5। ओके, करेक्ट। तो इसका एल वाई फुल हो जाएगा क्योंकि दिस ब्रेसिंग इज नॉट गिविंग एनी रिस्ट्रेंट टू दिस मेंबर, बट इट इज यस गिविंग सर। रिस्ट्रेंट टू दिस मेंबर, राइट? अभी इसका एल एक्स क्या होगा? इन दोनों मेंबर का एल एक्स क्या होगा? एल एक्स क्या है? लैटरल टॉर्सनल बकलिंग। लैटरल टॉर्सनल बकलिंग कहाँ होता है? टॉप फ्लेंज में, राइट? ये ऐसा सेक्शन है, तो जब हम इस पे लोड लगाते हैं कुछ, तो ये टॉप का फ्लेंज जो है सर्टन पार्ट इट विल ट्राई टू बकल, और ये ट्विस्ट होने का ट्राई करता है। क्यों करता है? बिकॉज ये उतना स्टिफ पार्ट नहीं रहता है। सो आप एग्जांपल लोगे तो क्या है, आप स्केल का ले लो। स्केल का एक सिंपल एग्जांपल है। स्केल दोनों हाथ में पकड़ो, ऊपर से लो, दबाओ उसको, वो बेंड होने की कोशिश करेंगे, बाहर निकलेगा वो, राइट? तो अभी इसमें एलएक्स क्या होगा? लैटरल टॉर्सनल बकलिंग। लैटरल रिस्ट्रेंट के लिए क्या है इसमें? यहाँ पे लैटरल टॉर्सनल बकलिंग के अवॉइड करने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है सर, तो 3 मीटर हो ब्रेसिंग, जाएगा सर। ये ब्रेसिंग भी इफेक्टिव नहीं है उसके लिए, लैटरल टॉर्सनल बकलिंग के लिए, राइट? सो इस केस में हमारा एल एक्स 3 मीटर होगा। अगर अभी यहाँ पे मैं बीम ऐड कर रहा हूँ तो क्या होगा? हाफ हो जाएगा सर। सर 1.5 हो जाएगा। हाँ, हाफ हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे बीम देते हैं, ऐसा जब टाई देते हैं इसको, तो ये टॉप फ्लेंज को बकल होने से, या जो टॉप पोर्शन है उसको ट्विस्ट होने से रोकता है ये भी। और जो ब्रेसिंग आता है वो हमारा यहाँ पे आता है, राइट? ब्रेसिंग विल कम समवेयर हियर। ऐसा कनेक्शन होता है। मैं कनेक्शन दिखा देता हूँ आपको। ये प्लान ब्रेसिंग है। कनेक्शन जो होता है वो कहाँ होता है? टॉप फ्लेंज के नीचे कनेक्शन होता है, राइट? सो इट इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिस्ट्रेंट टू द top flange, right? So even though if bracing is there, its lx will be always full. As long as there is no beam, as long as there is no beam, this beam, then lx will be full for these two beams. As soon as you put a beam here, then in that case its lx will get reduced, ly get reduced for these two members, right? ये मेंबर के लिए भी अभी ly हाफ हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस बीम, राइट? क्लियर है? यस सर। यस ये सर। भी ये भी मैं ऐड कर दिया। अभी ये मेंबर का एल वाई और एल एक्स क्या आएगा? 1.5 हो। एल एक्स है एल वाई, एल एक्स। एंड एल वाई। एल वाई भी सेम आएगा सर। ओके, करेक्ट। तो ये बीम दिया तो भी ये ब्रेसिंग उसको रिस्ट्रेन करेगा, बिकॉज लोड ट्रांसफर जो होगा यहाँ से होगा, अल्टीमेटली यहाँ से वो कॉलम एंड में जाएगा, राइट? यस सर। अभी ब्रेसिंग अगर निकाल देते हैं तो एल वाई हम, अभी इस केस में एल वाई क्या रहेगा? सिंपल यही केस है अभी। तो एल वाई क्या है? बीम है यहाँ पे, लेकिन एल एक्स क्या रहेगा, एल वाई क्या रहेगा? ब्रेसिंग नहीं है तो सर एल वाई तो हाफ ही रहेगा वो 1.5। अभी अभी ये क्या, एल वाई हाफ रहेगा और एल एक्स, एल एक्स भी हाफ ही रहेगा सर। तो एल वाई हाफ नहीं रहेगा, एल वाई फुल रहेगा। एल सॉरी वाई, सर, एल एल एक्स हाफ रहेगा, हाँ एल वाई फुल रहेगा। एल एक्स तो हाफ ही है, एल वाई फुल रहेगा। एल वाई क्यों फुल रहेगा? ब्रेसिंग सर हट गया।
हाँ, उससे क्या होगा लेकिन ब्रेसिंग हट गया ये स्टैंड हट गया सर वहां से। तो ये रिस्ट्रेन नहीं करेगा उसको, सर ये ये सिर्फ दोनों को। लेटरल डायरेक्शन में उसको अवॉइड करेगा सर, और वाई डायरेक्शन में अभी भी स्ट्रेन हो इसका सकता है तो। इसका डिफ्लेक्शन कैसे होगा, ऐसा होगा? यस सर। इस बीम का यस कैसे सर, होगा लैटरल डिफ्लेक्शन? इसका सर मतलब बीच मतलब टू टाइम्स में दो सर। कर्व बनेंगे सर, एक्स डायरेक्शन। ये ऐसा लग रहा है रोड, तो इसका ऐसा बनेगा, तो इसका कैसा बनेगा? आप बोल रहे हो दो में बटेगा ये, यस ऐसा? सर। यस सर। ये क्यों होगा ऐसा? ऐसा होगा क्या ये? और इसका तीसरे एक्चुअल का में सर कैसा होगा? एक्स में तो सर वो मतलब एस एस शेप में बनेगा सर। एस शेप में मतलब ऐसा? मिडल वाले का। मिडल वाले का? सोचो, थोड़ा और सोचो। इसका आप बोल रहे हो, या फिर ऐसा बनेगा, ऐसा बोल रहे हो, राइट? यस सर। और तीसरे का? तीसरे का कैसा बनेगा वो सोचो। तीसरे का ऐसा ही रहेगा, ऐसा रहेगा, या कुछ और तीसरा पैटर्न रहेगा? चलो मैं बताता हूँ आपको। ये भी, ये ऐसा भी नहीं बनेगा। ये जो बनेगा, ये भी ऐसा ही बनेगा, ये भी ऐसा ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आप जब इस पे लोड लगाओगे, ये बेंड होगा, एक्शन फोर्स इसमें ट्रांसफर होगा, ये इसको बेंड करेगा, फिर से ये बेंड होगा, ये इसको फोर्स ट्रांसफर करेगा, ये बेंड होगा, ये ऐसा बेंड होगा। When we want to transfer the force from beam to column, we need to have a bracing, राइट? ब्रेसिंग होगी तो ही ये फोर्स यहाँ से पीछे जाएगा कॉलम पे। अगर ब्रेसिंग नहीं है तो ये सबको एक साथ लेके जाएगा और ये टोटल डिफ्लेक्शन आएगा। ये डिपेंड करता है कि डिफ्लेक्शन कितना आएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? ये बीम का स्टिफनेस कितना है, हर एक बीम का। मान लीजिए ये आपका MB 200 है, ये MB 400 है, और ये MB 600 है। तो जैसे जैसे स्टिफनेस बढ़ेगा, ये डिफ्लेक्शन कम होते जाएगा। अगर यहाँ पे आपका इतना डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे कम होगा थोड़ा, और यहाँ पे और कम होगा। लेकिन इन सब का LY जो है वो फुल आएगा, बिकॉज देर इज नो ब्रेसिंग टू ब्रेक इट्स लेंथ इन माइनर डायरेक्शन। ये माइनर डायरेक्शन में इतना ही बेंड होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग अभी। ये रन किया हुआ फाइल है। यहाँ पे कैसा अभी मूवमेंट कैसा आ रहा है आपका? ऐसा आ रहा है? पर डिफ्लेक्शन देख लेते हैं। डिफ्लेक्शन शायद नहीं मिलेगा हमको क्योंकि लोड नहीं है। मूवमेंट के हिसाब से देखते हैं। मूवमेंट क्यों ऐसा आया? बिकॉज वी हैव ट्रेस्ड हियर, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा दिखा है कि डिफ्लेक्शन शुड दिखना है, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल ब्रेसिंग का दिखता है।
यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिफ्लेक्शन चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रेंट, राइट। अगर ये ब्रेसिंग निकाल देते हैं हम लोग, तो फिर से रन करेंगे। इसका डिफ्लेक्शन कैसे हुआ, ये कॉलम डिफ्लेक्ट हुआ उतना ही ये कॉलम हुआ, उतना ही ये कॉलम हुआ। रिस्ट्रेंट दिया किसी ने, ये बीम था हमारा, फिर भी इसने रिस्ट्रेंट नहीं दिया, मतलब इस केस में इसका जो इफेक्टिव लेंथ है ये कंप्लीट पूरा हो गया तीनों कॉलम का, ठीक। अगर हम सिर्फ ब्रेसिंग ऐड करते हैं अभी, तो अभी फिर से डिफ्लेक्शन देखेंगे। अभी रिस्ट्रेंट कर दिया सबको इसने, यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन कम हो गया, यहाँ पे भी कम हुआ, यहाँ पे शेप ही चेंज हो गया पूरा, राइट। तो दिस विल, द ब्रेसिंग विल प्रोवाइड रिस्ट्रेंट, एंड देन ओनली एल वाई फैक्टर जो है, एल वाई जो लेंथ है, लेंथ इन लाइन डायरेक्शन, वो चेंज होगा, राइट। क्लियर है, अभी एल वाई और एल एक्स क्लियर हो गया। यस सर। क्वेरी नहीं है एल वाई एल एक्स में। अभी एल जेड में देखते हैं। अभी ये यहाँ पे एल जेड ब्रेक होगा या नहीं होगा ब्रेसिंग की वजह से, तो यहाँ पे ही बता दो मुझे कौन सा एल वाई है कौन सा एल जेड है। ये मेंबर के लिए एल वाई क्या है, एल जेड क्या है, एल एक्स क्या है। इसका लेंथ है 5 मीटर, तो इसका एल वाई एल एक्स और एल जेड कितना है। एल वाई कितना है, एल वाई तो अभी समझ में आया था, एल वाई कितना है 2.5 5 कितना है एल वाई, 2.5 होगा इसका। एल वाई माइनर डायरेक्शन कौन सा है इसका अभी, ये मैं आपको शेप दिखा देता हूँ इसके ऊपर। ये शेप है, तो इसमें एल वाई कौन सा है, माइनर डायरेक्शन बेंडिंग कौन सा है, एल वाई तो कॉलम हो गया ना, कितना हो गया। एल वाई कॉलम है तो सर वो तो 4.5 था, 9 मीटर का हम लोग लिए थे तो 4.5 नहीं है। नहीं, कॉलम का नहीं, कॉलम का नहीं, बीम का। सर एल वाई तो 5 मीटर हो गया, एल एक्स, एल एक्स 2.5। एल एक्स 2.5, वो क्यों होगा 2.5, और एल वाई 5 क्यों होगा। नहीं सर सॉरी, एल वाई 2.5 होगा, एल एक्स एल भी वाई, वो, हाँ एल एक्स भी 2.5 होगा, ब्रेसिंग लगा हुआ है सर यहाँ पर, ओके। सपोर्ट लगा हुआ। सेक्शन का मेजर एक्सिस कौन सा है। मैं यहाँ पे दो एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, एक ये वाला एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है। इसमें एक्स, इसमें एक्सिस वाई और एक्सिस जेड कौन सा है, ये कौन सा एक्सिस है वर्टिकल वाई वाला, सर। ये वाई। वाई, ये जेड हो गया। हाँ वैसे मेजर एक्सिस कौन सा है, वाई है या जेड है, जेड। जेड है। तो ये जो बेंडिंग होगा, ये अबाउट किसके होगा, वाई के जेड अबाउट के या जेड अबाउट। के, ये जेड का है, राइट। अभी वाई के अबाउट मूवमेंट कैसे होगा, ऐसा होगा, यस सर।
तो ये तो वो बेंडिंग कौन सा है? ये बेंडिंग है, राइट? यस सर। ये एल प्लान में वाई बेंडिंग। 5 मीटर हो जाए। एल वाई कितना होगा? 5 मीटर हो जाएगा सर। और एल एक्स? एल एक्स 2.5 होगा एल एक्स क्यों 2.5 होगा? सर, क्योंकि वहां पे ये ब्रेसिंग लगी हुई है, जबकि वाई उसमें सर एल एक्स रिस्ट्रेन एल एक्स क्या है हमारा? लैटरल टॉर्सनल बकलिंग, राइट? लैटरल, लैटरल मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल। लैटरल टॉर्सनल बकलिंग फैक्टर तो जो टॉप फ्लेंज की वजह से होता है, जो टॉर्सनल बकलिंग होता है वो टॉप फ्लेंज का होता है। सो वी डू नॉट हैव एनी रिस्ट्रेंट हियर, करेक्ट? तो यस सर। टॉप टॉप फ्लेंज रिस्ट्रेंट नहीं, हमारा बॉटम फ्लेंज आप कह सकते हो कि रिस्ट्रेंट है बिकॉज ऑफ ब्रेथिंग। तो अगर आप एलिवेशन देखोगे, यस सर। यस सर। ये अभी देखो, ये टॉप फ्लेंज है, ये बॉटम फ्लेंज है। टॉप फ्लेंज रिस्ट्रेंट नहीं है कहीं पे भी, बॉटम फ्लेंज रिस्ट्रेंट हो जाएगा, राइट? तो इसलिए आपका एल वाई 5 मीटर आ गया, एल एक्स भी 5 मीटर आ गया, एल जेड हाफ हो गया, राइट? यस सर। ये दूसरा सर मतलब एल एक्स के लिए टॉप फ्लेंज रिस्ट्रेन होना चाहिए होना चाहिए, टॉप लेटरली। फ्लेंज रिस्ट्रेंट होना चाहिए तो ही एल एक्स ब्रेक होगा। यस सर। अभी यस सर। अब क्लियर हो गया। हाँ, अभी ये कॉलम है, इसका 4.5 मीटर हाइट है, ओके? अभी ये कॉलम का, ये एंड कॉलम का एल वाई क्या होगा? एल वाई क्या होगा, एल जेड क्या होगा? तो 4.5 होगा एल बाय तो। और एल एक्स? ठीक है, कॉलम के लिए एल एक्स छोड़ दो। कॉलम के लिए नॉर्मली एल एक्स दिखता भी नहीं है इतना, क्योंकि उसमें लैटरल टॉर्सनल बकलिंग ऐसा होता नहीं है जो बीम के लिए है। एल जेड क्या रहेगा? ये पूरा फ्रेम देखो अभी, मुझे एल जेड दो कॉलम का बता देना, एक एंड कॉलम का और एक इसका। तो इन दोनों के लिए एल जेड क्या है? सर एक का एलजेड तो इसका पहले वाला का एल जेड क्या है? 5 मीटर हो जाएगा सर। 5 मीटर? लेंथ उसका 5 ही मीटर है सर, वहां से कोई। ये 4.5, 4.5 और 9 मीटर, ये तीन लेंथ है कॉलम का यहाँ पे। यस सर। हाँ, तो एल जेड क्या है कॉलम का? इसमें पता नहीं चल रहा सर कौन सा एलजेड। आपको सिर्फ प्लान में देखने की आदत होगी ना, इसलिए एलिवेशन में गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे बीम का एल जेड क्या दिया था हमने? 2.5 था सर बीम का। तो यहाँ पे क्या हो गया वो बीम? अभी बताओ। अभी ये तो हॉरिजॉन्टल कर दिया मैंने। अब वही चीज सर, मतलब हाफ हो जाएगी सर फिर एल जेड। एल जेड हाफ होगा ना अभी? यस सर। तो कितना होगा वो? 4.5। 4.5। और ये कॉलम के लिए इसके लिए भी सर 4.5 ही होगा। 4.5 कैसे होगा अभी? 9 मीटर होगा ना, एल जेड है ये डायरेक्शन में तो उसको टाई ही नहीं है। एल वाई में टाई है, माइनर एक्सिस में टाई है, इसका एक्सिस कैसा है अभी? ये जो एक्सिस है वाई है, इसके अबाउट जो मूवमेंट है उसके लिए ये मेंबर टाई हो गया है। और जेड हाँ। जो है यस ये सर। यस। जेड है, तो इसके अबाउट के मूवमेंट के लिए कुछ भी नहीं है उसको, बराबर? अब
मूवमेंट का एक्सिस कंसिडर करो कि ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, बराबर। ये एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ये एक्सिस जेड हो गया। जब अबाउट वाई मूवमेंट आएगा तो ये रिस्ट्रेंट है, उसके लिए ब्रेसिंग वगैरह सब है इस डायरेक्शन में, तो इसका एल वाई कितना हो गया, 4.5 हो जाएगा। लेकिन जब जेड का मूवमेंट है, अबाउट जेड जो मूवमेंट है, तो ये डायरेक्शन में टाई कहाँ पे, एक ऊपर में टाई है और नीचे पिन सपोर्ट है, इन बिटवीन सपोर्ट ही नहीं है या टाई ही नहीं है कुछ, तो ये एल जेड क्या हो गया, ये फुल हाँ, लेंथ इन एल जेड मीटर हो हो गया, जाएगा। राइट। सिंपली एक ही काम करो आप, मूवमेंट का डायरेक्शन कंसिडर करो कि मेजर एक्सिस मूवमेंट कैसा है, माइनर एक्सिस कैसा है, तो उसको रिस्ट्रेन करने के लिए बीम है तो एल वाई हाफ हो गया, नहीं है तो फुल हो गया, करेक्ट। तो आगे का पैरामीटर देखते हैं, एल वाई एल एक्स एल वाई एल जेड कंप्लीट। आप फिर से एक बार वीडियो देखो ध्यान से, कंफ्यूजन है तो हम फिर से डिस्कस करेंगे। मेन मेन जो पैरामीटर है ये बाय डिफॉल्ट 180 है, ये डिफाइन करता है स्लेंडरनेस को। हमारा कॉम्प्रेशन मेंबर जो है उसका मैक्सिमम स्लेंडरनेस जो है वो 180 चाहिए। इफ बियॉन्ड 180 इट विल फेल because of slenderness only. It will not fail because of strength. Maybe there is very less force so that it can carry that force, but code is not allowing slenderness more than 80. So once you define main as 180, then all the members slenderness will be checked against this. Then NSF, this is one, this is net section factor for the tension member, but we don't design connection or we don't specify all bolts in the STAD while analyzing the member, so we don't need to define this factor. T-main 400 not required, because for tension member we don't check the slenderness, because 400 is very high limit, you never reach to 400 for any section. Profile none, by default कुछ भी define नहीं है. PSI 1, this also we don't require. Ratio is 1, by default it is 1, but we can define it like 0.8 0.9. This is utility ratio, for how much percentage of its capacity we have to use. If we define ratio as 0.9 or 0.85, then the section will be designed for its 85% capacity or 90% of capacity, so we'll still have some margin in that, that we can get. Or if you want to keep some margin, like sometimes if we don't have some loading data or some information is not available, but still we want to design the sections or issue the drawings, in that case we can keep the sections the utility ratio to zero point 0.7 or zero point 0.8, and then we can define, we can issue the drawing. So to get the ratio of all the section up to 0.7 or zero point 0.8, we have to define this ratio command in the stand. STP is for the specifies the section type for table 2. So for one it is hot rolled section, and for two welded section. So by default we consider one, because all are hot rolled section which we follow from the code or from the table, steel table. All those are hot rolled section. Built up section can be considered as a factor 2 or welded section. Track is the command which gives us the detailed output of the design. What is the worst load combination, how much is the capacity, how much utility ratio we are getting. So we define a track for that purpose. So there are three types of options available for this defining the track. When it is a zero, it gives minimum result, that it will give you only the utility ratio, actual moment and capacity. One track one will give you the some more additional result, that how much is slenderness, how much is capacity at various sections, and what is the load. And track 2 will give you the maximum detail, it will give you all the detail calculation, how we have arrived at load, and how much is the load, what is the capacity, at what section it is, what is the slenderness that particular location. So all mostly we define track 2,
But when we want to generate a report, it is good to provide a track one command, so that uh, when we are giving it is in someone to in report format, in order to minimize the number of pages, you can go with the track 0 also. But while checking the section, or before issuing the report, you can go with the track 2. So you will come to know what is, why the section is exactly failing, and what we need to do to pass that section. And TSP is a spacing of transfer stiffness. This is also for the built up section, and we don't define it in STAD. TST, this is used to control the transfer stiffness in design. So this will also not required, because in we don't define any built up section in the STAD. So from this we will just add some design parameters. So I have added already some design parameters here. So code, then beam 1 is to check the length for 12 locations, FU 450, FYLD 250, KY KZ I have assigned as 1, lateral 0 because all are unsupported. LOI, now in this case, LOI I have assigned 5, right? This will be a 5 complete length of the member. LZ 5, because why LZ is assigned 5? Because sometimes what happens, the bracings are designed only for the horizontal loads, right? In that case, what we need to do, we need to provide a slotted connection for this bracing, so that whenever there will be a gravity load, that bracing should not take the gravity load. So in order to consider that, you can define LZ as a full length, so you can ignore the advantage of this bracing. If you want to take advantage of bracing, and if you want to design this bracing for the gravity load for coming from the roof or structure, in that case you can define this LZ as 2.5, and you can design this bracing for dead load and live load also. Main 200, so you can consider as 180 also, based on the code. Then ratio 0. 0.9, I just want to keep the section sizes below 0.9. Then track 2, then check code command. Here you can get the command check code. Check code means it will check all the members for this code, and this is for member takeoff. So I'll just assign this for these two places as well. Okay. So the parameters are assigned already. So we'll just run this file. We'll just see how many sections are failing. You can just go to select by specification and all failed beams. So if we see these members are failing, once we double click on this member, we'll know why it is failing. So we just select, it is fail, it might be due to the slenderness. So where we can see that it is failing due to slenderness, even though it is showing the strength ratio of 0.31, but it is failing. It might be because of slenderness. So we will go to the output file. This is our output file, and we'll go to still design. We'll just search for the fail. So it is failing by ratio 1.236, and why it is failing? Its slenderness actual ratio is 203, allowable is 183. So we can calculate that ratio. So actual coming 203 divided by 180. So it is 1.12. So it is giving ratio near to this one only. So that's why it is failing in slenderness. So this is how we get the all details tracked by using track 2.
So in order to pass this section, here we have provided, I think, back to back. Instead of this, we can go with the star section. And for other members, so column, why it is column is failing? It is failing. It is also failing due to the slenderness 189. So slenderness, if I just make the slenderness ratio as 200, then we will see how many sections are passing. So only one section is passing now. The rest of the members were passing due to the slenderness, and this one is also passing, failing due to the slenderness. Its ratio is just more than 200. That's why it is failing, and maybe because of this bending also. So this is how we can check the result, and we can optimize the section by trial and error. Initially, we have to assume some sections based on the span, and later, once we apply all the load, all the parameters, and once we done the analysis, then we can change the section size as required by the analysis. So, any query up to this? स्टडी करके पूछूंगा सर। हाँ चलेगा, आप वीडियो देखो, सबसे क्रिटिकल है इसमें LYLZ। बहुत It is टाइम लगता है सर, वीडियो तो देखता हूँ, दिन दिन में बैठता हूँ उसमें, 1 घंटा देखता हूँ तो 4 घंटा खुद करता हूँ सर। नहीं, वो LYLZ देख लीजिए, क्योंकि स्टील में वही इम्पोर्टेंट है तो आपका उसमें ही थोड़ा जो कल, अगर कल क्लास होता तो उसमें ही डाउट क्रिएट होगा, क्योंकि अभी मैं पीछे वाला रिवाइज कर रहा हूँ, स्टील ऑफ लेक्चर थर्ड कल लेक्चर का सर। कल है क्लास अपना फिर से, कल और परसों दोनों है, क्योंकि अभी बीच में 2 दिन थोड़ा मेरे घर में काम चल रहा था, तो इसलिए नहीं हो पाया। तो कल और परसों दोनों टाइम क्लासेस है अपनी, तो आप चाहिए तो डाउट पूछ सकते हैं। ओके सर। सर वो यस डिजाइन पैरामीटर में आप गए थे, डायरेक्ट आप पहले से पुट कर रखे, तो वो सामने अगर पुट करते तो हम लोग को भी कुछ ज्यादा समझ में आता। वो मैं बताऊंगा आपको, कल चाहिए तो मैं फिर से बताऊंगा, बट ये इतना मुश्किल नहीं है। वो जब ग्राफिकली आप असाइन कर सकते हैं उसको। ये सब वो तो है, लेकिन सर सामने होता है तो वो चीज आदमी को ध्यान रहता है, कैच कहाँ से क्या हो। मैं कल आपको असाइन करके दिखाता हूँ, ओ, उसको एक बार फिर से दिखाऊंगा मैं। ओके सर। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर टुडे। एनीथिंग इज देयर, इफ यू जस्ट गो थ्रू द वीडियो, तो एक क्वेरी रहेगा, हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके सर। ओके, ओके, गुड नाइट ओके एवरीवन। सर, गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट नाइट। सर, थैंक यू सर। Good night.